everyone. So yesterday we completed the chapter, the subtopic, and now we will move forward with our next biological molecule, which is basically proteins. So proteins, we know that they are made up of amino acids. Now, so they're made up of amino acids. So let's look at the basic structure of an amino acid, that what basically is present in amino acid. So first and foremost, we have a central carbon atom. ठीक है जी? And around this carbon atom, the rest of the structure of an amino acid is formulated. So first we have a hydrogen. Then it's bonded to a carboxyl group. Carboxylic group is basically the carboxylic acid group that you've studied. So this is your carboxylic group over here. And then it is bonded to an amine group or an amino group. So this is basically your carboxyl group. This is your amino group. And this is a hydrogen. ये हमारे पास हर अमीनो एसिड में ये स्ट्रक्चर जरूर से प्रेजेंट होता है. But what makes every amino acid different from the other is a R group. ये जो R group होता है ना, ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं. खाली कोई एक एटम हो सकता है, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड हो सकता है. So this can vary for every amino acid. But what stays the same is this entire structure. This always stays the same. So we have a carboxylic acid group right over here. And then this is our amine group कह सकते हैं या amino group कह सकते हैं. And this is how we get the name amino acid. So this is basically the building block of, these are basically the building blocks of protein, and we have about 20 organic amino acids. और इन्हीं अमीनो एसिड्स के थ्रू हमारे पास फिर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ना हमारे पास एक चीज होती है Zwitterion. Now what happens is कि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है which is bonded to a hydrogen, तो only a few classes ago we understood कि हमारे पास ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, it has a greater tendency to pull electrons towards itself. So what happens is that there is a partial negative charge on the oxygen atom and a partial positive charge on the hydrogen atom. Why? Because oxygen has the ability to attract the electron cloud of this bond towards itself. So the electrons which are present, which are being shared between the oxygen and the hydrogen atom, they are drawn more towards this oxygen. So this gets a partially negative charge and this gets a partially positive charge. Now because of this, it is possible कि हमारे पास जो सारे electrons हैं, they move completely towards the oxygen and this hydrogen is separated. ठीक है जी, this hydrogen breaks off and obviously electrons जो हैं इस bond के वो किसके पास रह जाएंगे, oxygen के पास रह जाएंगे, and this hydrogen would actually be a what? It would be a proton basically, and it would go and it would attach itself over here. और क्योंकि यहाँ पर ये जाके एक यहाँ पर अटैच कर जाएगा over here with the nitrogen. अच्छा, नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है, एक वर्क में नाइट्रोजन कैन फॉर्म 1, 2 and 3 bonds. 3 bonds अगर नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है तो उसकी बैलेंस ही सेटिस्फाइड है, वो एक न्यूट्रल बेसिकली बॉन्डिंग कर रहा है. बट अगर वो एक से वो उसमें एक एडिशन हो जाए एक और हाइड्रोजन का, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन की जो कंप्लीट कैपेसिटी टू बॉन्डिंग है वो 3 है. Nitrogen makes 3 bonds. But over here, because it is accepting the hydrogen and forming yet another bond, it gets a positive charge.
तो हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे पास बेसिकली एक आयन फॉर्म हो रहा है, और वो आयन कैसे फॉर्म हो रहा है? लेट मी शो यू. लेट मी रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. Now this oxygen no longer has its hydrogen attached. Why? Because इसका जो hydrogen है वो किसके पास चला गया? To the amine group. So it has a completely negative charge on it. Why is there a complete negative charge? क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहे थे, वो जब हाइड्रोजन ब्रेक ऑफ कर जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास छोड़ जाता है? वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास छोड़ जाते हैं. तो ऑक्सीजन हैज electrons, then therefore it has a negative charge on it. And over here, our amine group, which already had two hydrogens, now has an extra H plus, and there is an overall positive charge. Now, if you notice, there is a negative charge and there is a positive charge present in this ion. Sorry, I forgot to draw the hydrogen. So here's the hydrogen. तो मेरे पास यहाँ पर एक negative charge है, and then I have a positive charge over here. So do you think that this species is an ion? And if it is an ion, what charge is basically present on this ion? What do you guys suggest? What is the charge of this ion? Would the charge be -1, +1, or would it be +2? Okay, so I am saying that when this OH loses its hydrogen and that hydrogen goes and bonds to this nitrogen, there is a negative charge on the oxygen. Why? Because when the hydrogen is broken off, it gives away all the basically हमारे पास OH का bond होता है. इस bond में हमारे पास electrons share हो रहे होते हैं between the oxygen and the hydrogen. So when this hydrogen breaks away from the oxygen, these electrons which were in the bond, they're completely now the belonging of the oxygen. So this oxygen would get a completely negative charge on it, and the hydrogen which has broken off will go and attach itself with the nitrogen, and there would be a positive charge over here. So something like this, which I have drawn below, this particular species, is attained, which is that there is a negative charge on the right hand side and there is a positive charge on the left hand side. So my question is that what would be the overall charge of this ion? Yes, so the overall charge would be 0. Why? Because this negative and this positive would cancel each other out. And this ion, which is basically formed when the amino acid loses its hydrogen from its carboxyl end, and that hydrogen goes and attaches to its amine end, that ion is called a Zwitterion. This is basically a Zwitterion. And this is electrically neutral. दिस डज नॉट मीन कि जो चार्जेस हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं या जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ज्विटर आयन में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, बट बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, they are cancelling the net effect of one another, and therefore we are calling them electrically neutral, but they would still be considered as an ion. Okay, now we know that amino acids are what? They are the building blocks of proteins. So basically हमारे पास जो basic species है या जो basic unit है of protein formation, वो क्या है? वो हमारे पास amino acid है. So now amino acids would combine together to form something known as a peptide. Now what happens is, जिस तरह से हमने previously condensation reactions पढ़े, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी condensation reaction होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं that the carboxyl end of an amino acid loses its OH, and the hydrogen is lost from the amine group of another end. Now we lose a water molecule is lost, and what do we form? We form something like this. See, double bond O, N, we have a C double bond O, N, which had this H, it's bonded to carbon, there's this R group,
then it's hydrogen, and then it's carboxylic end. Now tell me, what do you think is the peptide? So basically the bond over here, जैसे हमारे पास हमने कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड हमने पढ़े थे कोवलेंट बॉन्ड, वो हमारे पास कौन से थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स थे. In our lipids, we studied yesterday that lipids basically form ester linkages. ये उनके ester bonds थे. Basically ये पूरा हमारे पास ester bond था. So when amino acids condense together to form something called as a peptide, they form a peptide bond. And this is basically your peptide bond. कुछ लोग इस हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करते हैं इन द पेप्टाइड बॉन्ड, बट नेसेसरली मेजरली हमारे पास ये स्पीशी और ये स्पीशी आपस में बॉन्ड करते हैं, तो मेजरली आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. बट इन सम बुक्स और इन सम प्लेसेस ये हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो भी गलत नहीं होता है. But C double bond ON is your peptide bond. Okay, so this species, because it is made up of two amino acids, this is called a dipeptide. हमने अभी तक काफी ये वर्ड सुना है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, which is polypeptide. Polypeptide का मतलब है बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स या बहुत सारे अमीनो एसिड्स when they join together to form a polypeptide chain, that particular species is known as your polypeptide. For example, ये हमारे पास अमीनो एसिड है, ये हमारे पास अमीनो एसिड है. Now C double bond O N, then you have C double bond O N, then the remaining amino acid, then you have C double bond O and another amino acid. So this right here is a polypeptide chain for you. This is a polypeptide chain. Now let's count the number of amino acids present in this polypeptide chain. So we have 1, 2, 3, 4 amino acids. So we have 1, 2, 3, 4 amino acids making up this polypeptide chain. And if you could notice how many peptide bonds are there? 1, 2, 3. So can any one of you suggest that when a polypeptide chain of 4 amino acids consisting of 3 peptide bonds is formed, how many water molecules are lost? What do you guys suggest? When 4 amino acids come together to form a polypeptide chain, how many water molecules would be lost? That is correct. We would lose 3 water molecules. 3 water molecules are lost. And why so? Because हर bond formation पर एक water molecule lose हो रहा है. So if there are 3 bonds which are being formed, then we would have 3 water molecules being lost. That is correct. Now, acha, if I have to break these polypeptide bonds, if I have to break these bonds and make separate amino acids, what would I do? How would I get my separate amino acids? From which reaction? How would I carry out that reaction? That's correct, Hazra. We would carry hydrolysis. And for hydrolysis, what would I have to add to this molecule? Water. Exactly. So, जो water molecules lose हुए हैं in the formation of these bonds in the condensation process, if we add those water molecules, we can get back our amino acids, our basic structure. अच्छा. Now, moving on to the level of protein folding. अब हम लोग जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, so we said कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? We call the process protein synthesis. So we have protein synthesis. And for protein synthesis, we say that what happens is that we have amino acids which join together to give you polypeptides. And this is basically occurring at your ribosomes or your rough endoplasmic reticulum. Now, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से
पॉलीपेप्टाइड्स बनना, एंड देन वी नो ये तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आरईआर में, स्पेसिफिकली आरईआर में एक प्रोसेस होता था, पोस्ट ट्रांसलेशन modification. And when we were doing the subtopic of rough endoplasmic reticulum and cell structure, I said that there is another name for this post-translational modification. Can anybody of you tell me what was that name for this process, the post-translation modification? Or can you tell me what can happen in this post-translation modification? एक दफा हमारे पास polypeptide chain बन गई through translation. This is basically your translation process, which I have written above. This is translation. At the end of translation, you have polypeptides, but we know that polypeptides को भी further join together या properly orientation अपनी बनानी पड़ती है to form a protein molecule. And for that, they undergo protein post-translation modification at the RAR. So can you recall or can you suggest what was that post-translation modification? And if you cannot recall, can you give any suggestions, कोई guesses? वो तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा होता है, राइट? फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन occurs. ट्रांसक्रिप्शन तो हमारे पास डीएनए में हो रही होती है. डीएनए is converted into mRNA. ठीक है, this is your transcription, right? This is your transcription and this occurs at nucleus, within the nucleus. Then this mRNA and amino acids, basically mRNA and amino acids, okay, you can say protein synthesis में हम इसको डिटेल में देखेंगे, but mRNA and amino acids form a polypeptide chain. This is your final product of translation. अब हमारे पास at the end of this is your complete protein synthesis का process. At the end of protein synthesis, what do you have? You have a polypeptide chain. Now this polypeptide chain has to go through some changes, some modification to form a protein molecule, right? इसको प्रोटीन बनना होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं post translational modification, and this occurs within your RER. और इसका जो दूसरा नाम है जो हम इस प्रोसेस को अभी पढ़ने लगे हैं वो होता है प्रोटीन फोल्डिंग. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं दैट हमारे पास वी आर इन अ फैक्ट्री, ठीक है, और उस फैक्ट्री का काम है मैन्युफैक्चर करना. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोथ्स. अब हमारे पास होगा क्या, हमारे पास एक फैक्ट्री है, वो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन वो करती क्या है कि वो जो क्लॉथ है वो पहले खुद से बनाती है. तो वो क्या चाहिए होगा, उसको थ्रेड चाहिए होगा और उस थ्रेड से वो क्या बनाएगी, क्लॉथ बनाएगी, नेटवर्क ऑफ थ्रेड से. तो लेट्स टेक द थ्रेड एज योर mRNA and the cloth as your polypeptide chain. ठीक है, ये mRNA पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसलेट हो गया. नाउ जो हमारी फैक्ट्री है वो उसको बनाना क्या, उसको क्लोथ्स बनाना है. तो मैं खाली क्लॉथ तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू मेक क्लोथ्स आउट ऑफ इट. अभी मेरे पास उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो मुझे रिक्वायरमेंट है जिस मटेरियल की, मैंने अभी वो बनाया, मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है. इस पॉलीपेप्टाइड चेन से मुझे प्रोटीन बनाना है, करेक्ट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने क्लोथ्स को कट करूंगी, स्यू करूंगी, स्टिच करूंगी, राइट? मुझे ये सब करना पड़ेगा मेरे क्लॉथ के साथ टू फॉर्म माई क्लोथ्स, राइट? आई हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ विच इज माई पॉलीपेप्टाइड चेन, but I have to convert that cloth into a wearable cloth. I have to make a shirt out of it, for example. And that shirt is my protein molecule. That is my final product, which I have to sell, which I have to give to some destined location. So my polypeptide chain has to be organized into a protein. So this analogy we can use to understand the process of protein folding. Okay? Now what happens is हमारे पास होता क्या है, हमारे पास डीएनए होता है,
which has the information or the code of the protein or of the polypeptide chain. हमारे पास डीएनए जो होता है उसके पास एक कोड होता है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय डीएनए. This is one gene. This is my gene A. This is my gene B. This is my gene C. This is my gene D. Then this is B. This is A. And this is D. Now, every section of a DNA is your gene. And her section एक particular amino acid को कोड करता है. ये amino acid A को कोड करेगा, ये अमीनो एसिड बी को कोड करेगा, ये सी को, ये डी को, देन दिस वुड बी बी, ए एंड डी. Each gene has the information of which amino acid it would code. तो हमारे पास जो एक जीन है वो किसको कोड कर रही है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रही है, राइट? सो नाउ if I connect all these amino acids together, would I call this a polypeptide chain? Yes. Why? Because we know that amino acids join together via peptide bond, right? तो अगर मैं इन सारे amino acids को join together कर दूं, तो मेरे पास can I say that my DNA would basically be the determining factor of the sequence of amino acids in a polypeptide chain? यानी मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बन रही है उसको कौन डिफाइन या कौन फाइनलाइज या कौन डिक्टेट करेगा? वो मेरा डीएनए करेगा. बट बिकॉज मेरा डीएनए डायरेक्टली बाहर नहीं निकल सकता न्यूक्लियस से फॉर प्रोटीन से, तो उसको पहले अपने आप को ट्रांसलेट करना होगा इनटू द एमआरएनए. दैट एमआरएनए वुड टेक द कोड टू द राइबोसोम एंड फिर वो राइबोसोम आपस में अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा. बट व्हाट इज इट? हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक चीज हमें चाहिए होती है वो हमें अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी होती है, राइट? एक चेन बनाने के लिए हमारे पास उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन. सो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का? माई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ माई प्रोटीन इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी लेवल के स्ट्रक्चर जो मेरे प्रोटीन का होगा वो एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ अभी इसमें ऐड नहीं हुआ, एक सिंपल फर्स्ट स्टेप. यू कैन टेक इट कि मैंने क्लॉथ को अभी सिर्फ काटा है, जो कितना मुझे अपना क्लॉथ चाहिए टू मेक दिस शर्ट, आई हैव ओनली कट दैट मच अमाउंट ऑफ द क्लॉथ. सो दिस इज माई अमीनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. हर पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अपना यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हो सकता है, राइट? जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है एक पॉलीपेप्टाइड चेन की, और ये देखो, ये अमीनो एसिड ए, B, C, D, E, and then B, and then A, and then there is D. This is the sequence of amino acid for this particular polypeptide chain, and you can see that there are peptide bonds which are connecting these amino acids together. Now, ये हमारे पास प्राइमरी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया एक प्रोटीन का, जिसका बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं जो हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल एजुकेशन होती है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं विद एवरी ग्रेड लेवल, राइट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ फॉर्मिंग अ प्रोटीन फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दैट इज टू हैव दैट पॉलीपेप्टाइड चेन इन योर हैंड.